Good afternoon, student. Today's topic Dhundan School, and it is last and fourth sub school of Rajasthani painting, and this school also known as Jaipur School. Let's start with founder of Jaipur, Savai Jai Singh, first established Jaipur in 1727 AD, and Jaipur Dhundand school basically belonged to Kachwaha dynasty, and Ajmer, Jaipur, Dhundan, Shekhawati area and Uriara area uh, also submit in this Kachwaha dynasty. Clear? That's why the style that developed here is known as Dhundan school, Jaipur style, Amer school, Shekhawati style also. Dhundand school is divided into two parts. First, first phase, uh, this school was completed into two steps or two phases. First, Amer style, basically before establishment of Jaipur, Jaipur Kachwaha dynasty or Dhundand school known as Amer style, and after found after founded Jaipur, it is second phase of this style, Amer style. Before the establishment of the Jaipur, this style was called Amer style. This is early style of Jaipur style. That's why oldest example of Jaipur style was influenced by Amer style. Clear? Example: gardens of Bairat, the Chhatri of Mojmabad, and Bharmal, illustration of Rajmunama, Farsi translation of Mahabharat. They are the major examples of early Jaipur style, means Amer style. And wall paintings were belong to this style. Second part of this style or second phase is Jaipur style. It was the second phase step, a part of Jaipur school. Jaipur style was completely developed with the establishment of Jaipur by Raja Savai Jai Singh. That's why the golden period of Jaipur style was Raja Savai Jai Singh period, and it was completely influenced by Mughal style. After Savai Jai Singh, Maharaja Ishwari Singh also contributed significantly to development of Jaipur style. In this time, life-size portraits were chiefly made in this region, in this period. जो महाराजा ईश्वर सवाई जयसिंह के बाद जो राजा हुए महाराजा ईश्वरी सिंह, इनकी टाइम पे मतलब इन्होंने भी जयपुर स्टाइल को डेवलप करने में काफ़ी योगदान दिया, और इनकी टाइम की जो बेसिकली मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक जो था वो था कि जो पोर्ट्रेट थे, जो नॉर्मली बर्स्ट साइज के पोर्ट्रेट बन रहे थे, वो मतलब वो चेंज होकर के लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनने लगे, मतलब कि पूरे कंप्लीट आदमी का पोर्ट्रेट बनने लगा, फ्रॉम हेड टू टिल लेग्स तक, सर से लेके पूरा पैर तक आदमी का चित्र बनने लगा, जिसे आदम कद छवि चित्र भी बोलते हैं. क्लियर? Due to increasing British influence and discovery of photography, Jaipur style lost its originality.
ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के मतलब इन आफ्टर आफ्टर 18th century British company came to India, and he proper he completely totally effect in every matter, either government, either art field, either education field. they uh, they had totally influenced every matter. That's why it also affected in art matter also. And discovery of photography, Jaipur style lost its originality because of जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे आर्टिस्ट, जो इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाते थे, वो पेंटिंग्स क्या ज़्यादा मतलब उनके दाम भी, उनकी जो वैल्यू थी वो भी क्या ज़्यादा हुआ करती थी। तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो कंपनी थी उसकी इंडिया में आने के बाद में फ़ोटोग्राफी भी आने लगी थी, शुरू हो गई थी। तो फोटोग्राफी के अंदर कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मतलब एक ही किसी का भी चित्र फटाफट उसके प्रिंट निकलते थे। तो वो कीमत कॉस्ट में भी क्या होते थे, कम होते थे और जल्दी काम होता था, तो वो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करने लगे थे। तो इस वजह से जो पेंटिंग जो आर्ट थी वो धीरे धीरे से क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी। नेक्स्ट, मेन सेंटर ऑफ जयपुर स्कूल, जयपुर, उनियारा, शेखावटी, आमेर, अलवर मीन्स are the main center of Jaipur school. They centers belongs to Kachwaha dynasty also. Characteristics of Jaipur style, subject matter or theme. Basically, it related to before earlier sub schools or styles, like painting based on religious and Riti Kavya literatures like Bhagavad Puran, Adi Puran, Bihari Sastai, Durga Saptati, Bara Masa, Ragmala, Radha Krishna related themes also painted here. Instead of these court scenes, portraits, animals, fights, and female beauty also were depicted in this style. Human figures, male had medium stature, round face, high forehead, small nose, thick lips, fish-like eyes, and dressed on Mughaliya jama pajama patka with jewelry. Whereas females was depicted with fish-like eyes, blushing, round face, tresses swinging close to chicks, masculine body with wearing Mughaliya dress up and jewelry. Colors, natural colors mostly used here, like red, yellow, green, blue, gold and silver color also used here. Next most important feature of this style is Parda's work, light dark shadow. This is the main feature of this style. It was used to highlight the main part of painting. Margins in this style, border have been decorated with motifs carrying Persian effect like flora and fauna. जो बॉर्डर्स मार्जिन बनाए गए थे वो डिज़ाइनदार बनाए गए थे, और उनमें बेसिकली उनमें जो मोटिव जो अलंकरण किए जाते थे वो क्या थे, फ्लोरा एंड फ्योना, मतलब कि उनमें बेल, लताएं और पशु पक्षियों को बनाया जाता था उसके अंदर. हॉरिजॉन्टल लाइन और कंपोजिशन. In this style, composition was not based on the subject but was divided from horizontal with skies and clouds. Next and most important feature of this style, life size portraits. In this
style life size portraits have also been made with bust portraits. मतलब बस्ट पोर्ट्रेट के साथ में लाइफ साइज पोर्ट्रेट भी बनाए गए. मेजर आर्टिस्ट साहबदीन लाल चितेरा, साहबदीन लाल चितेरा, रामजी दास, घासीराम, रघुनाथ, गोविंद, गोपाल, हीरानंद, सालिग्राम, सेवक राम were the main artists of this style. Wall paintings. In this style, wall paintings have also been made with miniature paintings. Here, this is complete our Rajasthani miniature paintings. We have already teach about 4 sub school of this style. Now we teach about the common characteristics of Rajasthani painting or Rajasthani school. First, डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर और थीम. विभिन्न प्रकार के जो सब्जेक्ट रहे और थीम रही इस पेंटिंग की वो देखिए. द थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग वर प्राइमरी द फॉलोइंग 3. यहाँ पे मुख्यतः जो थीम्स को 3 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट, रिलीजियस पेंटिंग. सेकेंड, लिटरेरी पेंटिंग. एंड थर्ड वॉज जर्नल पेंटिंग्स. Now first, religious painting. Ramayana, Mahabharata, Radha Krishna, Bhagavad Puran, Durga Saptati, etc. were mostly depicted in this style. Second, literary painting. Basically, this was related to literature. Other than the above subjects, inspired from Indian epic, devotional poetry, romantic poetry, and Indian music were also their theme, like Bhakti Sagar, Riti Kavya, Geet Govind, Sur Sagar, Rag Mala, Rasik Priya, Nayak Nayika Bheda, Bara Masa, Panchtantra were majorly depicted in this style. Next, journal paintings. Journal painting included court scenes, portraits, night scenes, journal life, battle scenes, ballad and folklores, मतलब कि लोक गाथाएं और लोकगीत पर आधारित have been painted in Rajasthani school. नेक्स्ट, लाइनर ब्यूटी. रेखांकन कैसा हुआ. बोल्ड लाइन्स आर apparent in initial phase. Later line became thin, rhythmic, soft and graceful in this style. Color scheme. All emotions are showed by the colors like red for anger, yellow for marvelous, blue for royal, bright and glowing colors are used in this style. Pure hue of red, yellow, blue, brown, white without mixing any other color were used here. Means pure color, mostly pure color used in this style. Gold and silver color also used to add glamorous. Next feature is two-dimensional paintings. द्विआयामी पेंटिंग्स बनाई गई. Forms are defined with simple lines and flat colors. Means टू डायमेंशनल को दिख ज़्यादा बेसिकली बनाया गया, मतलब कि उसमें लंबाई और चौड़ाई तो है, बट जो तीसरा जो डायमेंशनल होता है जिसे बोलते हैं हम डेप्थ, जिसे बोलते हैं हम
वो चीज़ इसमें नहीं थी। तो उसी की वजह से यहाँ पे सिंपल लाइंस और फ्लैट कलर यूज़ किए गए, क्योंकि जो डेप्थ वगैरह जो आते हैं वो शेडेड वगैरह से आती है, तो वो इसमें नहीं थी, वो बाद में जाके डेवलप हुई थी। आर यूज्ड इन बैकग्राउंड, पर्सपेक्टिव डिटेल्स, हॉरिजेंटल और स्काईलाइन आर नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर। नेक्स्ट characteristics is symbolism. Radha Krishna represent in the form of soul and God. मतलब कि यहाँ पे सिंबल जिसे बोलते हैं ना, प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे चित्रण किया गया। अब प्रतीकात्मक रूप में कैसे, जैसे राधा कृष्णा को जहाँ पे डिपिक्ट किया गया वो सोल एंड गॉड के रूप में किया गया, आत्मा परमात्मा के रूप में उसको डिपिक्ट किया, स्पेशली किशनगढ़ स्टाइल है। कृष्णा एंड गोपीज फॉर डिवोशन एंड रोमांस, नेचुरल थिंग्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स रिप्रेजेंट्स भाव in this style. Next feature is spiritful love. Show sentiments of love and devotion with joy of life. लाइफ को जो बताया गया, जो यहाँ पे लव को स्पिरिटफुली लव को डिपिक्ट किया गया है, उसको जीवन का एक मतलब एक अंग, मतलब आनंद मानते हुए उसको डिपिक्ट किया गया है। लाइक राधा कृष्णा, बारामासा, रागमाला, नायक नायिका भेदा was the main example of this point. Next feature, human figures. All the figures are identical, body smaller in proportion to face. Female figures are painted with lotus, fish, vector like eyes, flowing hairs, firm breast, slender waist, rosy and thin lips and thin fingers depicted in this style. Human faces are shown from different angles. Mostly faces are made in एक चश्म or profile face. Depiction of nature. Different trees, mountains, water spring, floral trees, lakes, deserts, etc. have been beautifully depicted in this style. Animals and birds came as Mughal influence. Nature has been associated with human emotions. नेचर को बेसिकली ह्यूमन इमोशन के साथ रिलेट करके डिपिक्ट किया गया है. बॉर्डर एंड मार्जिन्स, प्लेन बॉर्डर्स विच बिकेम लेटर ऑर्नामेंटल और एंड डेकोरेटिव. स्टार्टिंग में जो प्लेन बॉर्डर्स बनाए गए वो धीरे धीरे अलंकृत और उनमें डिज़ाइनदार उसको बनाना शुरू कर दिया था इस स्टाइल में. यहाँ पे आपका पूरा राजस्थानी जो पेंटिंग है, ये राजस्थानी स्कूल है, वो कंप्लीट हो चुका है.